So good evening students. Today I am going to discuss about properties of determinants. Properties of determinants. Already I have discussed about the application part of determinant. Now today I am going to discuss one of the important part of determinant, that is properties of determinants. Okay. Now these properties are true for any type of determinant. Okay, so these properties are true for all determinants. अभी ये properties का use क्या है? जब कुछ टॉपिक कुछ चैप्टर स्टार्ट करता है तो उसका तो कुछ यूज होना चाहिए, राइट? अभी ये properties का यूज क्या है? See, determinant means what? Determinant means what? Determinant is a number associated to a square matrix. Yes or no? वो नंबर कहाँ से मिलेगा? If I expand like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको अगर expand करके जो वैल्यू मिलेगा वही तो है determinant, right? But if the numbers are like 1908, 2052, 67919, 2212, इसको expand करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा. Yes or no? We can expand also. Here also we can expand by using this cross multiplication method. But ये सब नंबर को अगर एक्सपांड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? That's why in this case we have to use these properties. There are some advantages of properties of determinants. ठीक है, अभी वो properties मैं डिस्कस करूंगा. हमेशा ही एक्सपांड करना है डिटर्मिनेंट का मतलब ऐसा नहीं है. प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो विदाउट एक्सपांशन ऑल्सो वी कैन फाइंड द रिजल्ट. ठीक है, एक्सपांड करने से भी जो रिजल्ट मिलेगा विदाउट एक्सपांशन ऑल्सो विल गेट द सेम रिजल्ट. इन दैट केस इफ द नंबर्स आर लाइक ह्यूज लाइक 190, ऐसा नंबर होने से एक्सपांड करने में दिक्कत होता है तो फिर जाके ये सब प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा. ओके, सिर्फ प्रॉपर्टीज को मेमोराइज करना है, मेमोरी हो जाएगा. न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा. ठीक है. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ रोज एंड कॉलम्स, सुन लो, if rows and columns of a determinant are interchanged, अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो then the value of the determinant, det means determinant, okay, then the value of the determinant remains unchanged. What is the first property? If the rows and columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant remains unchanged. क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल देखो, से इफ आई राइट डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 3 2 1, इसको एक्सपांड करने से जो आंसर मिलेगा आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स मीन्स व्हाट? दिस इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट कॉलम में लेके आओगे, सेकंड रो को अगर सेकंड कॉलम में लेके आओगे और थर्ड रो को अगर थर्ड कॉलम में लेके आओगे, दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज ना, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स. सो आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स आल्सो यू विल गेट द सेम आंसर. ये दोनों को एक्सपांड करो, सेम आंसर मिलेगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, then the value of the determinant remains unchanged. Okay, this is the example. You can expand it. तुम लोग चेक करके देख सकते हो. इसको एक्सपांड करके जो आंसर मिलेगा इसको भी एक्सपांड करके सेम आंसर मिलेगा. मैं यहाँ पे क्या किया, ये एग्जांपल में जस्ट रो और कॉलम को इंटरचेंज किया. ठीक है, ये रो कॉलम इंटरचेंज करना पहले भी मिला था तुम लोगों को. कहाँ पे मिला था वो? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. यस, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स ऑल्सो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स. So from the first property, ये बहुत important note है. From the first property, we can say that if A is a square matrix, then determinant of A, which is equal to determinant of A transpose. ठीक है, ये सब चीज नोटिस करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन से दैट इफ A is a square matrix means equal number of rows and columns. If A is a square matrix, then determinant of A is equal to determinant of A transpose. This is the determinant of A, suppose, and this one is what?
इंटरचेंज कर दिया ना रो एंड कॉलम, तो मतलब ये ट्रांसपोज हो गया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, सो इक्वल है ना. ओके, सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ वी विल सिंबॉलिकली राइट, देखो रो एंड कॉलम को इंटरचेंज किया, तो रो एंड कॉलम को इंटरचेंज किया तो ये सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जस्ट यू हैव टू राइट सी आई इंटरचेंजिंग आर आई, मतलब आर आई मीन्स ith रो, सी आई मीन्स ith कॉलम. ओके, सिर्फ कॉलम और रो को इंटरचेंज किया. इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल ऐसा देख सकते हो 1 2 3 4, ठीक है. अगर इसको रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा, यस और नॉट? तो इसको सी आई इंटरचेंज आर आई फॉर्म में भी लिख सकते हो, रो एंड कॉलम इंटरचेंज किया, ठीक है. सिंबॉलिकली वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. समझ में आया फर्स्ट प्रॉपर्टी? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देखो, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, then the value of such determinant become negative of itself. ठीक है, if any two rows, कोई भी दो रो और दो कॉलम, if any two rows or any two columns of a determinant are interchanged, then the value of such determinant becomes negative of itself. For example, say A, B, C, D, E, F, X, Y, Z. ओके, क्या है प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट? इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, आइदर दो रो को इंटरचेंज करना है, नहीं तो दो कॉलम को इंटरचेंज करना है. लेट अस इंटरचेंज दिस टू रोज, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, D, E, F, A, B, C, X, Y, Z. किसको किसको इंटरचेंज किया? फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज किया. How can we represent it symbolically? R1 interchanging R2. So if R1 interchanging R2, if we can interchange any two rows or any two columns, then just you have to put one minus sign. This is minus sign. ठीक है? This is the second property. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of such determinant become negative of itself. ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा. खुद एग्जांपल लेके देख सकते हो, ठीक है. इसको एक्सपांड करके जो आंसर मिलेगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, एक्सपांड करके देखो, यू विल गेट द सेम वैल्यू बट ऑपोजिट साइन मिलेगा. फॉर एग्जांपल इसको एक्सपांड करके, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इस लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपांड करके अगर -20 आएगा तो राइट हैंड साइड को एक्सपांड करने से +20 ही आना चाहिए. ओके, आफ्टर इंटरचेंजिंग एनी टू रोज एंड एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, automatic the value becomes negative of itself. This is the second property. And how can we represent symbolically? साइड में रीजन लिखना पड़ेगा, क्या क्या इंटरचेंज किया. एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा तुम क्या क्या इंटरचेंज किया? That's why you have to write down the reason also. Here we are interchanging first row and second row. R1 interchanging R2. This is interchanging symbol. Okay, this is our second property. Let us discuss the third property now. Third property tells us that if all the elements of any two rows or columns of a determinant are same, or you can say identical, then the value of the determinant becomes 0. This is the third property. What is the third property? If all the elements of any two rows or any two columns of a determinant are same, or you can say identical also,
then the value of the determinant becomes 0. Without expanding we can write 0. This is the advantage of properties of determinant. expand नहीं करके भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए properties को memorize करना पड़ता है. ठीक है. For example, say A is equal to determinant 1 2 3 4 5 6 1 2 3. मैं expand नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे expand करना जरूरी नहीं है. Here you have to use the property. Now what is the property? Property number 3. If all the elements of any two rows or any two columns of a determinant are identical. Now look at this example. This first column and this one is the third column. Yes? Now check once their corresponding elements. Same corresponding element. Same corresponding elements. Same. Yes? Without expansion we can write 0. इसको तुम expand करके देखो आंसर 0 ही आएगा. लेकिन expand करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर रहे हैं विदाउट एक्सपांडिंग बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड आउट द वैल्यू. तो इसको एक्सपांड नहीं करके भी लिख सकते हैं बिकॉज दिस टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल. एनी टू कॉलम्स और एनी टू रोज आइडेंटिकल होना है. तो इसका रीजन क्या लिखोगे? सिंस C1 is equal to C3, first column is equal to third column, that's why answer 0. Okay, so this is our third property. Now let us discuss the fourth property.